Today's topic is the osteology of sacrum bone. Anatomical position of the sacrum bone. Sacrum bone, it is the midline bone, right? This is the midline bone. It is the midline bone. Superiorly, here is like the L5 lumbar vertebra, right? Inferiorly is the coccyx bone. On each side is the hip bone, right? It is the midline bone, right? It is formed by the pelvic bony pelvis, right? Posterior superior wall of bony pelvis, like superior surface of the body first sacral vertebra sloping. जो superior surface of first sacral vertebra इसकी जो superior surface होती है वो sloping होती है, slopes forward at the angle that is make the angle 30 degree, right? Anterior surface it is concave. This one is the anterior surface. This one anterior surface of sacrum it is downward and forward. Posterior surface it is anterior surface it is concave and posterior surface is convex. Convex surface lies backward and upward and concave surface lies and forward and downward. Now upper end, this one is the upper end. Upper end of the sacral canal is directed almost upward, right? Now move on the next slide. Now features and its attachment, right? Firstly, this one is the base, right? It is triangular in shape. It is flat bone. It is triangular in shape. It lies posterior superior wall of bony pelvis. Now, being the triangular bone, when it is triangular bone having base, apex, three surface, right? Firstly, this one is the base, your upper surface, right? And apex, this is narrow part. This is called apex of the sacrum. Now it has three surface, anterior surface, right? Posterior surface and two lateral surface. Lateral surface of the sacrum it articulate with the ilium of the hip bone. दोनों साइड से hip bone लगी, right and left hip bone. Ilium, ischium, pubis. The ilium part articulate with the sacrum, right? Articulate with the sacrum that is formed by the joint sacroiliac joint, right? It is plain synovial joint, right? Sacrum is divided by the rope. Sacrum, this one is the pelvic surface, this one is the anterior surface, this one rope, right? Sacrum is divided by the rope of a foramen of the both side, right? It is median part, right? This one is the lateral part. तो रोप ने इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. दिस वन इज द मीडियल पार्ट, दिस वन इज द लैटरल पार्ट, राइट? मीडियन पार्ट इट इज ट्रांसवर्स बाय द सैक्रल, ट्रैवर्स बाय द सैक्रल कैनाल. मीडियल पार्ट, जहाँ ये मीडियल पार्ट है, इसके पीछे जो रन कर रहा है बिहाइंड द मीडियल पार्ट दैट इज ट्रैवर्स द सैक्रल कैनाल. ठीक है, वी विल डिस्कस later on. Now lateral part, this one is the mass of sacrum. It lateral mass of the sacrum, it fusion of the transverse process, right? ये transverse, posteriorly is the fusion of the transverse process and anteriorly is the fusion of costal element, right? Now sacral canal I will discuss कि behind the medial portion it is traverse the sacral canal. Base, for the sake of description, can be divided into central portion and the two lateral part. Lateral part that is called ala. Central portion it show the feature of the typical lumbar vertebra, right? Typical lumbar vertebra, it has body, right? Body, its transverse diameter is greater than the AP diameter, right? Anterior-posterior, like a thoracic lumbar sacral one vertebra, so AP diameter is less compared to the transverse diameter. Its anterior border projected forward as sacral promontory, right? मैं आगे सब चीजों को दिखाऊंगी. It articulate with the fifth lumbar vertebra. Fifth lumbar vertebra articulate with the sacral S1 vertebra that is formed by the joint that is called lumbosacral joint, right? The angle between the anterior surface of fifth lumbar vertebra and ventral surface of S1 vertebra, that the lumbosacral angle, it approximately 210 degree.
पहली चीज लंबर 5 वर्टिब्रा से एंटीरियर सरफेस ऑफ लंबर 5 वर्टिब्रा से एक प्लेन पास करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और S1 की एंटीरियर सरफेस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस लाइन, लाइक दिस। ये जो एंगल बनेगा, राइट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 210 डिग्री, राइट। Now anterior and posterior surface of the body, first sacral vertebra provide the attachment of the lowest fiber of the anterior longitudinal and posterior longitudinal ligament। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा। अच्छा, लंबर वर्टिब्रा में यही लिगामेंट हम बताएंगे, अभी नहीं बताया, anterior and posterior longitudinal ligament। Now move on the next slide। बताया कि उसमें बेस था फॉर द सेक ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल पोर्शन एंड लेटरल पोर्शन। This one is the central portion and this one is the lateral portion, right? The central portion and this one is the lateral portion, that is called ala। Now central portion में हमने क्या देखा, उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था इट शो द फीचर लाइक अ लंबर वर्टिब्रा, राइट। तो उसमें बताया था एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज लेस कंपेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा और एपी डायमीटर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होगा। इट एंटीरियर बॉर्डर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड एज ए सैक्रल प्रोमेंट्री। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड सैक्रल प्रोमेंट्री, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट था इट अंटीरियर बॉर्डर इट आर्टिकुलेट विद द लंबर L5 vertebra that is formed by the joint that is called this one joint, this is called lumbosacral joint। लंबर 5 vertebra और sacral के बीच में बन रहा था, that is called lumbosacral joint, right। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था द एंगल between anterior surface of L5 vertebra and anterior surface of S1, मतलब this like this, ऐसे आएगा और ऐसे, this angle, that is angle, it is 210 डिग्री। मतलब एक प्लेन पास करेंगे anterior surface of L5 vertebra and anterior surface of sacral S1 vertebra। That is angle, that is called lumbosacral angle, it is approximately 210 degree, right। Next point, the anterior and posterior surface of body of first sacral vertebra, it provide the attachment of the anterior, this one anterior border surface and this one is the posterior surface, there is the attachment, this one here to here, anterior longitudinal ligament and here is the posterior longitudinal ligament, right। This one is the sacral canal and this one is the superior articular process, this one is the superior articular process, it is concave and lies medially। This one is the posterior sacral या dorsal sacral foramen जो हमने पहले बता दिया। This one pelvic and ventral sacral foramen, this one coccyx bone, this is the coccyx bone, there is the joint, एक मैंने बताया था sacrum और coccyx के बीच में बन रहा है, that is called sacrococcygeal joint, right। This one is the hiatus, सब डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन इज द हाइटस, sacral and lower end is sacral canal, that is called hiatus, right। This part is inferior articular facet is free, that is formed by the sacral cornu। This one is the medial sacral crest, this one, right। This one is the intermediate sacral crest, right, and this one is the lateral sacral crest। This one is the articular surface या auricular surface, auricular मतलब articulate with the sacrum, right। This one is the dorsal and posterior sacral foramen, right। This one is the anterior या pelvic, because there is lie in the pelvic surface, that is called pelvic sacral foramen, right। This one S1 vertebra, this one S2 vertebra, this one S3 vertebra, this one S4 vertebra। This is prominent part, that is called transverse rigid। What is called transverse rigid? Lateral to the transverse rigid, that is foramen, जो हम पीछे बता चुके हैं। This is wing like, fan like, this is called ala। इसमें मैंने बताया था medial portion, lateral portion, right। This one is the body, right। L4 vertebra, this one is the concave in shape, right। Now move on the next slide।
वर्टिब्रल फोरामेन, पहले सबसे हम बात करेंगे वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन देख रहे हैं हम, इट इज लंबर वर्टिब्रा में हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर इन शेप का होता है, इट इज लाइक अ ट्रायंगुलर, सारे फीचर्स इसके उसी से मिलते हैं। इट इज द ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप फोरामेन। इट इज लीड्स टू द, इसके अंदर से इट लीड्स इनटू द सैक्रल कैनाल, इट लीड्स इनटू द सैक्रल कैनाल, दिस वन इज द सैक्रल कैनाल। वेयर इज द सैक्रल कैनाल? सैक्रल कैनाल बिहाइंड द बॉडी, there is the, it is formed by the triangular in shape cross section that is lead into the sacral canal. Second point, it is the pedicel. What are the pedicel? हम फिर अभी लंबर वर्टिब्रा में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। pedicel, pedicel it is short pedicel, this one is the pedicel, right? pedicel it is the short and directed backward and laterally. कैसा रहेगा? देखिए डायरेक्टेड बैकवर्ड जा रहा है, स्लाइटली लेटरली जा रहा है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं लमाइनी। लमाइनी इट इज डायरेक्टेड, अब देखो इसका डायरेक्शन देखो, इट इज ऑब्लिक, राइट। और इसका डायरेक्शन कैसा है? बैकवर्ड एंड मिडली, राइट, बैकवर्ड एंड मिडली, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो अपर मार्जिन ऑफ लमाइनी, देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंटम फ्लेवा, कहीं लिखा होगा, दिस वन इज द लिगामेंटम फ्लेवा अटैच ऑन द अपर मार्जिन। नाउ स्पाइन, this is the spine is the, this one is the spine, first spine that is forms the first spinous tubercle, modified first spinous tubercle, right? superior articular process, superior articular, this one is the superior articular process, हम और भी अभी देखेंगे। तो it is concave in shape, projected backward and medially, इट इज आर्टिकुलेट। अब यहाँ पे L5 वर्टिब्रा रख जाए, L5 वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है, उसके साथ इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलेट विद द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, राइट। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। It is on either side of the body, on either side of the body, on either side of the body, it is formed by the fusion of transverse process, right। अब जो चीज हम बता रहे हैं that is called एला, राइट। इट इज ऑन either side, ये बॉडी है, बॉडी के दोनों तरफ दिस इज द एला, राइट। ट्रांसवर्स प्रोसेस इट इज पोस्टरली, राइट, यहाँ पोस्टरली आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंटीरियरली इज द कॉस्टल एलिमेंट दैट इज फॉर्म बाय द एला ऑफ बोन। एला ऑफ बोन में मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट, मीडियल पार्ट इज द स्मूथ, लिखा होगा, इट इज मीडियल पार्ट स्मूथ एंड लेटरल पार्ट इज रफ, both are covered by the ella are covered by the psoas major muscle। smooth part is related to from lateral to medial, हम lateral से medial चलेंगे। अब ये इसका lateral हुआ। सबसे पहला पॉइंट O, I, L और S, O से ऑब्टुरेटर नर्व, राइट, ऑब्टुरेटर नर्व कहाँ गया? दिस वन इज द ऑयल्स, ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद आता है ऑब्टुरेटर नर्व के बाद आता है दिस वन ऑब्टुरेटर नर्व, तो दिस इज द ऑब्टुरेटर नर्व, राइट। उसके बाद आता है ओ, फिर आता है आई। आई में देखते हैं, आई से हम याद करने का तरीका बनाते हैं आई और एल, दैट इज कॉल्ड इलियो लंबर, जोड़ो इलियो लंबर आर्टरी, राइट। तो ऑब्टुरेटर नर्व, इलियो लंबर आर्टरी। उसके बाद आता है एल और एस, राइट, एल और एस से बनाया लंबो सैक्रल ट्रंक, राइट। तो तीसरे पे आ गया एल, मतलब लंबो सैक्रल ट्रंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। एंड एस इज स्टैंड फॉर सिंपैथेटिक चेन, यहाँ पे हो गया सिंपैथेटिक चेन, राइट। ये ऑयल्स के रिलेशन हो गए। लेटरल एरिया, दिस इज द रफ एरिया, देयर इज अटैचमेंट, इट इज डिवाइडेड आल्सो डिवाइडेड एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। Anteriorly is the attachment of the iliacus muscle, right, this is the iliacus muscle, and posteriorly ventral sacroiliac ligament। now move on the next slide। और जो भी मैंने पीछे एक चीज बताई थी, दिस इज द वर्टिब्रल, दिस वन इज द सैक्रल कैनाल, जो वहाँ पे नहीं डायग्राम अच्छा था तो मैं दिखा दे रही हूँ, सॉरी, दिस वन इज द सैक्रल कैनाल, राइट, दिस वन इज सैक्रल कैनाल, दिस वन इज स्पाइनस ट्यूबरकल, जो हमने पीछे बात करी थी। नाउ एपेक्स पार्ट, एपेक्स इट इज नैरो पार्ट, इंफीरियर सरफेस। अब देखिए L1, सॉरी सैक्रल 1, 2, 3 और 4, 5, राइट। इंफीरियर सरफेस ऑफ सैक्रल
5 vertebra articulate with the coccyx bone that is formed by the sacrococcygeal joint, right? वही चीज यहाँ पे लिखी है। फिर हम बात करते हैं सरफेस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वही मैंने पीछे एक चीज डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा जब रख जाएगी, यहाँ पे देयर इज द लंबर वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद द बॉडी here to here. This one is lumbar vertebra that is formed by the L5 vertebra. This is formed by the lumbosacral joint, right? वहाँ मैंने बताया था superior articular facet. This one is the superior articular facet. It is concave in shape. There is the superior articular facet also. It is concave in shape. It lies medially. Then inferior articular facet articulate with the superior articular facet. That is the this one. This articulate with this. ठीक है, lumbar vertebra में और डिटेल में बताएंगे. Now pelvic surface. पेल्विक सरफेस इट इज, इसका मेन पॉइंट पेल्विक सरफेस का क्या है? इट इज कॉनकेव. पेल्विक सरफेस इज कॉनकेव एंड स्मूथ एंड कॉनकेव इन शेप. एंड डॉर्सल सरफेस इट इज irregular and convex in shape, like dorsally, posterally. And lateral surface, this one is the lateral surface. Lateral surface is that larger part and narrow part जो हम पढ़ेंगे. Larger part that is the auricular surface, it is L in shape, and this one is the posterior part that is the peated part, right? इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कुछ लिगामेंट आते हैं और मसल्स आती हैं. और this is the narrow part, that is the narrow part, there is the lateral surface, right? Now move on the next slide. This one is the pelvic surface. Pelvic surface, it is smooth and concave in shape. This surface is faces downward and forward. I will discuss before downward and forward in the anatomical position, right? Now this pelvic surface is divided into two part, right? अब कैसे इनको टू पार्ट में डिवाइड किया? It is divided into two part via the ridges. These are rope of the four foramen. This one is rope of the four foramen. 1 foramen, 2 and 3 and 4 on either side, right? ये 4 foramen से हमने डिवाइड कर लिया इसको सेंट्रल पोर्शन and the lateral portion, central part and lateral part. This part is called central part, and either side of the foramen, sacral foramen, ventral sacral foramen and pelvic sacral foramen, this one is the lateral part, right? Now central part, there is a 4 transverse ridges, 1 2 3 4. Lateral to the transverse ridges, that is called sacral foramen, right? What are the indicate the transverse foramen? 4 transverse ridges, 4 transverse ridges which indicate the fusion of the body of sacral vertebra, right? And lateral to the transverse ridges, there is the lies the opening, that is called sacral foramen, that is called pelvic sacral foramen, ventral sacral foramen, anterior sacral foramen. Now anterior ventral sacral foramen, pelvic sacral foramen is communicate with the sacral canal. There it communicate with sacral canal through the intervertebral foramen, right? Now pelvic sacral foramen transmit क्या पास करता है? Ventral rami of upper fourth sacral nerve and lateral sacral arteries passing through it, right? Now move on the next slide. And lateral to the sacral foramen, there is this part is the lateral part of pelvic surface. Pelvic sacral foramen, ठीक है? Pelvic sacral foramen, pelvic sacral foramen is communicate with the sacral canal through the intervertebral foramen. अब जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, जो हम आपको वर्टिब्रा में लंबर वर्टिब्रा जो पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में दिखाएंगे. पेल्विक सैक्रल फोरामेन कम्युनिकेट विद द सैक्रल कैनाल. अब ये पेल्विक सैक्रल फोरामेन है, ये सैक्रल कैनाल से कम्युनिकेट जो कर रहा है, अब इसके अंदर ये कम्युनिकेशन हो रहा है जो अंदर वो थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. कैसे होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन? मान लो L3 वर्टिब्रा, L4 वर्टिब्रा. L3 वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है, L3,
और L3 वर्टिब्रा के इंफीरियर ऑर्टिकुलर फैसिट, L4 वर्टिब्रा का सुपीरियर ऑर्टिकुलर फैसिट, दोनों जहाँ इंफीरियर और सुपीरियर ऑर्टिकुलर फैसिट जहाँ आर्टिकुलेट कर जाएंगे दैट इज inferior vertebral notch, superior vertebral notch articulate with each other, that is formed by the intervertebral foramen. तो यही intervertebral foramen जो है इसको communicate कराता है, right? Now median area, median sacral, अब जो median area मैंने divide किया था, this part is the median area, right? Median area that is related to first one median sacral vessels, यहाँ से जो अटैचमेंट रहेगा, स्ट्रक्चर रिलेटेड रहेंगे मीडियन सैक्रल बेसिस इन द मिड लाइन. सिंपैथेटिक चेन कहाँ रहेगा? इन दिस वन इज द सैक्रल कैनाल या वेंट्रल सैक्रल कैनाल, राइट? जो मैंने अभी सैक्रल कैनाल बोला था या पेल्विक कैनाल. पेल्विक कैनाल की ये क्या रहेगी? मिडली देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द सिंपैथेटिक चेन, राइट? उसके बाद आता है पेरिटोनियम. पेरिटोनियम से रिलेटेड रहेगा अपर 2.5 देयर इज द अटैचमेंट, अपर 2.5 देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द peritoneum, and lower 2.5 there is the attachment of the rectum and superior rectal artery, and there is the attachment of the piriformis muscle. Piriformis muscle जो यहाँ पर attach रहेगी, this one is like piriformis muscle, right? Piriformis muscle का यहाँ पे origin होता है, ठीक है. Now dorsal surface, it has median sacral crest, intermediate sacral crest and lateral sacral crest, ठीक है. One by one discuss. First one, medial sacral crest. Medial sacral crest, it is formed by the 3 to 4 spinous tubercle, which is formed by the fusion of 4 spinous process, right? Upper 4. This one is the medial sacral crest, right? Lateral to the medial sacral crest, there is the lateral to the medial sacral crest. This one is the medial sacral crest, right? Fusion of the spinous process. This one is the medial sacral crest, right? This one is the sacral canal, end of the sacral canal. This is the sacral hiatus, right? और this one is the posterior sacral foramen, right? हमने पढ़ा था pelvic sacral foramen. This is the posterior dorsal sacral foramen, right? Lateral to the medial sacral crest, there is the oblique lamina, right? Oblique. Lateral to the oblique lamina, that is articular part. This is called superior and inferior articular facet articulate with each other. That is formed by the, it is imaginary line that is called, this one is called intermediate sacral crest, ठीक है. Right, lateral to the intermediate sacral crest, this is the foramen. This is called dorsal sacral foramen. The dorsal sacral foramen also communicate with the sacral canal through the intervertebral foramen. The lateral to the lateral to the posterior sacral foramen, there is the small tubercle. It is small tubercle is formed by the transverse or fusion of transverse process. This call is the lateral sacral crest, right? So this one is the medial sacral का supraspinous process के fusion से बना. This one is the articular process, articular tubercle. It's formed by the intermediate sacral crest, and the transverse process there is formed by the lateral sacral crest, right? 4 sacral dorsal foramina, it's located into the intermediate sacral crest and communicate with the sacral canal through the intervertebral foramen. मैंने बता दी इस चीज को. उसके बाद हम बात करते हैं medial sacral crest, right? This one, median sacral crest and the lateral sacral crest, right? Medial and lateral sacral crest, there is the attachment of the erector spinae muscle. कौन सी spinae? Erector spinae muscle. और जो इनका बीच का part है, here is the concavity. It is the concavity. Here is the attachment of the multifidus muscle, right? वही चीज उसमें मैं समझा रहे हैं. This one is the medial sacral crest. दोबारा से रिवीजन, मतलब चीजों को बता रही हूँ. This one is the medial sacral crest. This one is the medial sacral crest, right? जो हम पढ़ चुके हैं. This one U-shaped manner, last vertebra is not fused, that is called sacral hiatus. Inferior articular facet of the L5 vertebra, that is free. This is called superior cornu. Now this one is the lateral to an oblique lamina. This one is the oblique lamina.
And lateral to the oblique lamina, this is the tubercle, superior articular tubercle, its fusion that is formed by the intermediate sacral crest. Now dorsal sacral foramen. Dorsal sacral foramen is communicate with the sacral canal, right? That is communicate with the intervertebral foramen, right? यहाँ पे मान लो अंदर के लिए intervertebral foramen से communicate कर रहा है, right? Lateral to the dorsal sacral foramen there is the transverse process, fusion of the transverse process. There is the lateral sacral crest, right? These are three crests. Now this one is the coccyx vertebra, जो मैंने बताया sacrococcygeal joint बन जाएगा, right? उसके बाद हम बात करते हैं passing structure through. This one is the superior articular process. This one promontory part. This whole is called lateral surface. It is L in manner. This one auricular surface. It articulate with the ilium bone, and lower part, this is narrow part, right? Or there is the peated part is posteriorly, right? This one is the articular surface, L5 vertebra. This one is the dorsal. This one sacral canal. This part is the ala, जो मैंने बता दिया, oils relation. Now move on the next slide. This one is the lateral surface. Firstly, upper part जो उसका रहेगा wider. This one is the upper part, it is wider, and lower part it is narrow, right? Upper part it is L in shape, right? देखो ये L बन गया. It is auricular surface. Auricular से A से auricular, A से articulate with the ilium of the hip bone that is formed by the sacroiliac joint. It is the plain synovial joint, ठीक है? Ilium articulate with the ilium, that is sacroiliac joint, that is plain synovial joint. And the anterior and inferior margin, this one anterior and inferior margin, there is the attachment. This one anterior margin and the inferior margin, there is the attachment of the ventral या anterior sacroiliac ligament, right? उसके बाद हम बात करते हैं behind the auricular surface. This is the peated part. It is fusion of the transverse process. There is peated part. There is the attachment here. Behind the auricular there is the attachment of interosseous sacroiliac ligament. This is the interosseous sacroiliac ligament. And posterior to this there is the attachment of the dorsal sacroiliac ligament, right? And lower part, this is the lower part, it is narrow, right? Narrow part. Remember two muscle and two ligament. हम जाएंगे anterior to posterior. सबसे पहले anteriorly हमारी जो मसल आएगी, this one is the anteriorly, it is muscle that is coccygeus muscle. Behind the coccygeal muscle, that is called sacrospinous ligament. And behind to sacrospinous ligament, this is the sacrotuberous ligament, and behind to sacrotuberous ligament there is the attachment of the gluteus maximus muscle. तो remember कि दो मसल रहेंगी और दो लिगामेंट. तो कैसे याद करेंगे? पहले सबसे मसल, फिर लिगामेंट, राइट? फिर लिगामेंट, फिर मसल. तो ये रहेगा मैनर कैसे रहेगा? anterior to posterior. Now move on the next slide. अब बात करते हैं sacral canal, right? Sacral canal हमने बहुत बार बताया. Sacral canal, sacral vertebral foramen. This one is the sacral vertebral foramen. This will lead to the sacral canal, right? This is the sacral canal. It is in cross section, it is triangular in shape, right? This one is the lamini of the fifth sacral vertebra do not fuse, give the rise the sacral hiatus, right? अब ये sacral canal है, end of the sacral canal, this is called sacral hiatus. कैसे बना वो बता दिया, इससे पहले भी बता चुके हैं. fifth sacral vertebra do not fuse, give the sacral hiatus. It is U, inverted U in shape, inverted like this, inverted U in shape, that is called sacral hiatus, right? Sacral hiatus. अब हम बात करते हैं sacral canal passing structure through the sacral canal. जब देख रहे हैं कि cauda ecuna, lower part of sacral coccygeal nerve and root, phylum terminal and spinal meninges and lateral sacral vessels, right?
और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, रिमेंबर दैट सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा marks the lower limit of the dura mater, arachnoid mater and subarachnoid space, right? Now move on the next slide. Structure emerges through the sacral hiatus. Sacral. Fifth sacral nerve. Pair of coccygeal nerve. Pair of phylum terminal. Right? ये sacral hiatus से यहाँ से passing structure. Now move on the next slide. Now sex differences. What are the sex differences in between male and female? How can identify this one is the sacrum bone? It is male and it is female. Firstly, most important point, male sacrum overall narrow and male sacrum overall narrow, right? दोनों साइड से क्या होगी? narrow and longer, right? In case of female, it is wider, right? It is wider and shorter. और यहाँ क्या रहेगी? narrow and longer, right? Second point, sacral index in case of male, sacral index is less, or in case of female, sacral index is highly higher. ठीक है? Now, male sacral index is 105. Now, female, its sacral index 115, right? Now next point, base. This one is the base of the male sacrum. Now width of body of first sacral vertebrae is longer than the ala of sacrum. ये कह रहा है बॉडी जो है उसकी विड्थ ज्यादा होगी कंपेयर टू ala of sacrum, right? Now other end, this one is the female sacrum. It is equal, both are equal. इसकी जितनी विड्थ होगी उतनी इसकी, तो both are equal, right? ala of sacrum. Now the next point, this one is the pelvic surface. पहले बता चुके, this one is the pelvic surface, this one also pelvic surface. Pelvic surface, it is concavity uniform and shallow in male. Uniform and shallow in male. Compared to female, there is deeper. एक पॉइंट और है, लेटरल व्यू नहीं दिख रहा है. लेटरल व्यू में हमने पढ़ा था आर्टिकुलर सरफेस. तो इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो हमने देखा था बी शेप की थी, लाइक दिस. तो उसकी जो कॉन्केविटी है, दिस वन इज द कॉन्केविटी इन केस ऑफ मेल में बता रही हूँ. इट इज कॉन्केविटी, इट इज लेस इन केस ऑफ मेल, ठीक है. In case of female, it is concavity. Concavity is sacrum is इसमें जो डॉर्सल कनकैविटी है, राइट, इसमें जो डॉर्सल कनकैविटी है आर्टिकुलर सरफेस की जो पार्ट है लेटरल सरफेस, दिस इज डॉर्सल कनकैविटी. It is more. Why? Because of female sacrum is shorter, right? Thank you so much.